गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेम्स ऑफ फाइनेंस। मैं आज बैठा काफी स्टॉक्स देख रहा था ताकि कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो मार्केट में तो उसमें इन्वेस्ट किया जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए जिसमें काफी अच्छे रिटर्न्स का मौका हो। एंड आई केम अक्रॉस अ कंपनी विच आई फाउंड वेरी एक्साइटिंग। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूं, एक्सप्लोर करूं, शेयर करूं। Obviously, it's not a buy or sell recommendation. This is a company by the name of MPS Ltd. जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका प्राइस आज के दिन है अराउंड 1500. It was around 3079 and the lowest was around 1467. So we are near its lowest price in the last 1 year, around that is 1500. So there has been a fall of around 42%. So there is a good margin of safety in this company. So let us have a look at its 5-year range also. So this company MPS Limited provides publishing solutions including typesetting and data digitization services for overseas publishers and sports international publishers through every stage of the publishing process. So it's a small cap company. So mostly हम जो अभी फोकस कर रहे हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज पे कर रहे हैं ताकि हमें एक मल्टी बैगर या हमें काफी अच्छी ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटीज मिले जिनमें ग्रोथ भी अच्छी हो और आज के दिन हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग भी हो। क्योंकि मेरा पर्पज ये होता है हमेशा कि जो मैं कंपनीज देखूं उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी हो, उनमें वैल्यू की भी हो। दो तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। मेरा मानना है कि अगर दोनों एक साथ हम अगर हमें ऐसा कोई स्टॉक मिल पाए जो दोनों क्राइटेरियाज को मीट करे तो उससे अच्छा आज के दिन कुछ नहीं है। मार्केट कैप अराउंड 2500 करोड़ है, तो मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। इट्स रैंक्ड अराउंड 1044. इट्स हाई रिस्क कंपनी बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑब्वियसली। अब हम सीधा फाइनेंशियल्स अगर देखें तो दिस ग्रोन ओवर द लास्ट 5 years एट ए ईयरली रेट ऑफ 16%, वेयर एज द इंडस्ट्री एवरेज हैज ओनली बीन 2%. Net income has also grown at a yearly rate of around 20% and market share has basically doubled or approximately doubled over the last 5 years. That is, it has increased from 3.53% to 6.70%. The last 4-5 years, if we see from the year 21 or 20, revenue has increased from 350 to 430 to 460 to 510 to 557 to 745 to 782 now. So basically the revenue has been increasing all over. Net income has also been increasing. Net income has increased from around 58 crores to 87 to 110 crores, around 118, 148 and 173. So there has been a good growth in income also, and they are saying that the stock is underpriced. And if we see there are no red flags also. यहाँ पे forecast भी available होता है जो एनालिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि अभी इसका प्राइस 1500 है और लोएस्ट मतलब जो अभी फ्यूचर में जो इसकी ग्रोथ होनी है एटलीस्ट 2800 तक तो जाएगा, 2800 तक। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अराउंड 86%, 80% ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। रेवेन्यू में भी ये कह रहे हैं कि अराउंड अभी आज के दिन 745 अगर करोड़ की अर्निंग है तो ये एटलीस्ट 770 करोड़ तक जाएगी। और ईपीएस भी दिखाया जा रहा है कि अगर आज के दिन 87 है तो ये 97 तक तो जाना ही है। दैट इज अराउंड 10% इंक्रीज है। और जहां अर्निंग इंक्रीज होती है वहां प्राइस ऑब्वियसली प्राइस की भी इंक्रीज होती है स्टॉक मार्केट में। तो forecast is also in favor of this company. Financials have also been good. Let us have a total assets are around 670 crores, whereas liability is only 190 crores. So basically the total equity so basically they have kept on increasing the equity amount in this company, so it's profitable all over. Now if we see the holdings, the promoters have stayed constant in the last 6 months. If we see, foreign institutional investors have also participated in this company, so it shows that there is a interest or there is a confidence shown by foreign institutional investors also, which is always a good sign. So featuring in 2 funds, that is Quantum Small Cap Fund and Motilal Oswal Fund. Now we'll go to screener for certain more details about this company. Now we can see that ROC has been a very healthy 40%. ROE has been 30%, and around the 200-day moving average is around 2100. Company is almost debt free. That is a very good sign. No cons are showing, so that's a very healthy sign. Stock is providing a good dividend yield also. There has been a 22% CAGR
over the last 5 years. Peer comparison available also, physics wala. So MPS, the company which we are having a look at, is available at a P of 15. So basically it's the lowest P among its peers. Veranda is available at a 71 Ps, which is a very high figure for me, I think. Jaru Institute is 20, Addictive is 20, Sodani is 27, Jet King Sama is trading at a 278 P. अगर हम ROCB ROCE देखें तो वो भी इसका ही सबसे हाई है. जारो का इसके आसपास है. जारो में ऑल्सो बी अ वर्थवाइल. सेल्स ग्रोथ अराउंड 13% हुई है 10 साल में, 17% over 5 years, 17% over the last 3 years. Profit growth has been around 10% over the last 10 years, 22% over the last 5 years, and 18 over the 3, and 26 over the last trailing 12 months. Return on equity has been 30% in the last 1 year. They are investing, so that is minus, and financing, so basically they are repaying money, so that is also a good sign. So cash flows are also good. If we have a look at FIS, it's PineBridge Global Funds which has invested. DIIs are not showing public. Mukul Mahavir Agarwal is a substantial shareholder. The company is present in 15 countries. Key markets being North America, Europe, Middle East, India and APAC. So basically diversification है. Business segment इसके हैं. Content solution is around 53% of the revenue share. Platform solution is 23%. E-learning solution is 24%. The company has acquired 8 companies in the last 10 years. So basically इनका focus inorganic growth पे भी रहा है. और द कंपनी का टारगेट है रेवेन्यू का 1500 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 28. डबल कर रहे हैं अपना अगले 2 साल में रेवेन्यू, मतलब दैट इज द प्रोजेक्शन. कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बेसिकली, क्योंकि ये पहले अराउंड 3000 पे ट्रेड कर चुकी है. सो बेसिकली अगर ये वापस भी उस पे जाती है तो 100-150% का मार्जिन सीधा सीधा दिख रहा है if it's able to maintain. So this company started in 1970, started Macmillan Publishing Solutions to help publishers and produce books and journals. 1976, former British Prime Minister inaugurated their information processing division. Then they set up a direct satellite link for a large customer in Amsterdam. Then they began Macmillan, a new learning and media services business unit. So basically then they launched InsightVisor, an analytics platform for scholarly publishers. Acquired Element LLC Florida, raised $25 million through institutional investors, expanded their fulfillment services, reached 100 plus Fortune companies by acquiring Tata Interactive Systems, and then they scaled their AI capabilities and entered B2C markets by acquiring AJE. And they have now expanded their presence to Singapore also. Total addressable market for education services is around $470 billion. Research outsourcing is $11 billion, and corporate e-learning is $357 billion. So I think this is a company worth exploring because काफी अच्छा margin of safety मिल रहा है इसमें अभी भी. और अगर हम टेक्निकल्स फोरकास्ट जो यहाँ पे अवेलेबल होता है वो भी देखें तो बाय रिकमेंडेशन इसकी 100% है. अपसाइड इसकी 86 दिखाई जा रही है. फॉरवर्ड EPS ग्रोथ इसका 11 दिखाया जा रहा है. सो गाइज, आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर. ड्यू डिलिजेंस मस्ट बी डन बिफोर एंटरिंग इनटू एनी स्टॉक, एनी कंपनी.